All right, very good evening, and let us begin with the session. So now you can see my screen clearly, right? And so far we are done with around 30 pages or something. And today we would be completing the rest of the pages, and I hope we would be completing the entire PDF by the end of the day. So just confirm voice and screen both are perfectly fine so that we can move ahead. Anyone? The voice is clear? Yes, ma'am, the voice is clear. Okay, all right. Thank you. So now let us begin. And this is the PT 365 of the environment from April and December. So these are the articles in front of you. You can see here is the list of the articles. And environment PT 365 is definitely essential for the prelims. You should at least have one round, if not possible. ज़्यादा मत देखो. लेकिन the important articles are at least something you should have a look. For example, mission life, कार्बन मैनेजमेंट वाला जो आर्टिकल है ईयू के साथ में, ठीक है. और फॉर एग्जांपल वी कैन टॉक अबाउट दिस यूएनईपी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. देन डब्ल्यूएमओ इज इंपॉर्टेंट. ग्रैप इज समथिंग जो कि बहुत ओल्ड आर्टिकल है, इट इज नॉट न्यू. सो दिस इज समथिंग a very old article. Then cloud seeding, you people might know kya hota hai cloud seeding. Again, cloud seeding is a PYQ. Okay, this cloud seeding is a PYQ. Then we have the water trading, we have the water credit. So there is something called as water trading as well. Then plastic pollution. So plastic pollution pay in 2019 UPSC asked about microbeads. Okay, so in same fashion they can ask you about plastic waste management rules, so they can ask you about the parabens or something like that. They can play around. Then you have the plastic overshoot day. Then land degradation. UNCCD is important. UNCCD is important. After that, Minamata Convention is something you people are reading since long. And likewise, we have some more articles here. Now, let us begin with first the things which we have done already. We would be just summarizing it, and then we'll be moving ahead. So you people can access the latest comment section. Is it there? All right. So you can see that starting at the 5 p.m. sharp wala jo comment box hai, you people should use it for your answers. Okay, so that aap sabhi ke answers ek jagah compiled ho jaye, and you people can go through it whenever required. Okay, fine. So we have the ozone layer depletion first of all, and डेफिनेटली बस थिन हुआ है या क्या हुआ है आपको वो पता होना चाहिए, ठीक है. उसके बाद में न्यूज में क्या था क्या नहीं, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट, ठीक है. उसके बाद में वी हैव द मेजर जो ओजोन को डिप्लेट करने वाले सब्सटेंसेस है, ठीक है. दीज आर इंपॉर्टेंट. क्लोरीन, ब्रोमीन, ओके, क्लोरीन, ब्रोमीन, देन CFCs, देन कार्बन टेट्रा क्लोराइड. सो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है. अगेन इस पे कई बार क्वेश्चन आए हुए, ठीक है. उसके बाद में अगर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं तो हुंगा टोंगा जो है, ठीक है, ये एक टाइप के आर्किपेलागो, एक आइलैंड्स भी है. लोकेशन यू शुड नो, पैसिफिक ओशन. बस इतने पेज में और कुछ ज्यादा आपको जाने की जरूरत है. डॉप्सन में डेफिनेटली हम काउंट करते हैं. ओके, डॉप्सन में काउंट किया जाता है, तो ये भी याद रखना होगा. उसके बाद में जो इम्पैक्ट है ओजोन लेयर के या वोल्केनिक इरप्शन के, वो क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है. तो एक चीज ध्यान रखना, जो ये सल्फर होता है, ठीक है, सल्फर के बहुत क्वांटिटी होते हैं वोल्केनोस में. प्लस ये सल्फर बहुत ज्यादा एनवायरनमेंट को कूल भी करता है, तो इट हैज अ कूलिंग इम्पैक्ट. ओके, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फॉर ozone. Okay, Montreal for ozone. And in this Montreal Protocol implemented under Vienna Convention, then universally ratified. Okay, this section is important. Okay, now coming ahead, what you can do, just remember this: India and Montreal Protocol means what is the relationship both of them are sharing together. So, okay, so you can see here, this is important.
किगाली जो आया था, ठीक है, किगाली वाला अमेंडमेंट जो था, बस किगाली वैसे 2016 में आया था, ठीक है, उसके अमेंडमेंट अब जाके 2021 में हुए थे, ठीक है. Then stage of cryosphere. So before that, like before coming to this article, anyone can tell me what do you mean by cryosphere? What is cryosphere? क्या होता है cryosphere? Anyone? And those who want to speak but are muted, so just like no, raise your hands. I will unmute you. All right. Those who want to answer but are muted, so just let me know. Oh yeah, cryosphere. Cryosphere is important. Tell me, what do you mean by cryosphere? All forms of water in ice. Okay, all form of water. What about permafrost? What about permafrost? See, all form of water, like जो water वाला keyword है, that's not correct. इसके हिसाब से तो फिर ocean, even like no, अगर एक water of glass है तो वो भी cryosphere हुआ. If we go by the keywords, like the Hello, definition I have mentioned. Yeah, ma'am. please. Can I say Earth ice in all its form, like ओके, आइस का फॉर्म होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है. आइस इज मेड अप ऑफ वाटर, बट आइस का फॉर्म होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है. सेमी फ्रोस्ट हो गए, जितने भी लैंड एरियाज जो आपके लाइक नो कवर्ड विद द स्नो है, आर्कटिक हो गया, अंटार्कटिक जोन हो गया, सो दिस इज इंपॉर्टेंट. क्रायोस्फीयर इज like no UPSC has framed a mains question over this topic. So इसलिए क्रायोस्फीयर की लाइक नो एकदम डेफिनेशन समथिंग कुछ पता होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है. Let us see if they have given something like definition or something. But before that, we can see that no, nearly all tropical glaciers, जो like no mid latitude areas में वो disappear no all over हो चुके हैं. उसके बाद में frozen part of the planet, okay, help to regulate the earth temperature exactly like no albedo ज़्यादा होता है. Now anyone can tell me what do you understand by albedo? Albedo का मतलब क्या होता uh, amount of sun rays reflected by the Earth. है? Exactly. Okay, so tell me, ice का albedo ज़्यादा होगा या Yes, sand? ma'am. किसका ज्यादा आइस होगा है? का आइस का ज्यादा होगा मैम, क्योंकि सैंड ऑब्जर्व करता है हीट को, आइस रिफ्लेक्ट ज्यादा करेगी, आई थिंक. एग्जैक्टली. ओके, सो ज्यादा किसका होगा? ऑब्वियसली आइस का होगा, ठीक है. आइस का होगा एल्बेडो. एल्बेडो ज्यादा होना मतलब सनलाइट ज्यादा रिफ्लेक्ट होगी. एल्बेडो को इक्वल में ना रिफ्लेक्ट रखो, तो उससे के लाइक होल में आप कंफ्यूज नहीं होगे कि अब क्या मतलब होता था, ठीक है. Likewise, I have one more question to ask you people. Just utilize this space here. Suppose I give 4 type of climate. Okay. सपोज करते एक इक्वेटोरियल है आपके पास में, एक टेम्परेट है, एक टैगा है और एक टुंड है. फाइन. नाउ अरेंज देम इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द एल्बेडो. आपको इन सभी को एल्बेडो के डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना. प्लीज अरेंज. मतलब सबसे ज्यादा एल्बेडो किसका होगा, फिर किसका किसका किसका, मैम लाइकवाइज. सबसे ज्यादा टुंड्रा का होगा, फिर टैगा का, फिर टेम्परेट का, फिर इक्वेटोरियल का. एनीवन वुड डिफर विद द आंसर ऑफ एसके, लाइक किसी और का कोई और व्यू है? Same, ma'am. एग्जैक्टली. ओके, सो दिस इज करेक्ट. दिस इज करेक्ट. टुंड्रा का सबसे ज्यादा होगा, फिर टैगा का होगा, फिर टेम्परेट का, इक्वेटोरियल का तो लाइक नो इस ऑर्डर में कम होगा और वैसे भी कम ही हो जाता है. ओके, दिस इज क्लियर. ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है. इन क्रायोस्फीयर आपको सभी को पता ही होगा कि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कहते हैं, ठीक है. नाउ इन दिस सीरीज आई हैव वन मोर क्वेश्चन टू आस्क यू. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्लू कार्बन? व्हाट इज ब्लू कार्बन? Ma'am, carbon trapped inside ocean water. Exactly. Okay. Blue carbon. Same wise we have the green carbon. तो green carbon क्या होते हैं? जितना भी कार्बन लाइक नो आपकी
फॉरेस्ट लैंड एरियाज में कवर्ड है या सिक्वेस्ट्रेटेड है, दैट इज कॉल्ड एज अ ग्रीन कार्बन. ठीक है, फाइन. नाउ लाइक नो ice has melt, they are not an issue, just we have to remember these two things, एक तो वेटल सी और एक थ्वाइट्स ग्लेशियर. these two things are important. रॉ सी तो हमने ऑलरेडी कई बार लाइक नो प्रीलिम्स में जब भी हमने डिस्कशन किया है, मैपिंग की है, उसमें बहुत बार ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है. ठीक है, इंडिया किसका मेंबर है अंटार्कटिका ट्रीटी का? यस, इंडिया इज ए मेंबर. यस, ठीक है. उसके बाद में मैत्री भारती, ये याद होने चाहिए, बाकी चीजों को आप स्किप कर सकते हैं. ठीक है, लाइक बेसिक चीजें याद हो जाती है. ठीक है, what do you understand by arctic amplification? Anyone can tell me arctic amplification, what do you understand by this term? The rate of heating of Arctic. Okay. Anyone else? It's happened like polar area, basically, like largest difference of temperature near the north and south pole. Both of you are correct. So arctic amplification, again I would say, जैसे क्रायोस्फीयर है, ब्लू कार्बन है, वैसे आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन है. सो यू हैव टू जस्ट रिमेंबर द लाइक नो बेसिक टर्मिनोलॉजीज. Okay, now like they have explained here how the entire phenomena is happening. So importance क्या है आर्कटिक सी आइस की? तो लाइक नो बायोडाइवर्सिटी को इफेक्ट कर सकते हैं, ट्रेडिशनल सब्सिस्टेंस हंटिंग जो है, ठीक है, उस पे इश्यूज आते हैं. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्लू ओशन इवेंट? ब्लू ओशन इवेंट, व्हाट इज ब्लू ओशन इवेंट? See, color is changing from white to blue. What it means? The ice area is decreasing. Ice area is decreasing. Okay, because ice is of white color. तो अगर वो melt हो गई तो it will turn into the water, and water has a blue, like no bluish kind of color. So blue to white वाला जो, sorry, white to blue वाला जो event होगा, that is a blue ocean event. Alright, so it means what? It shows the global warming के जो levels presently we are witnessing, right? The next we have is the COP28. Again, I would say you can go your own. Like this is nothing, something like we should discuss it. Then yeah, Sharm el Sheikh जो था, जो एक रिपोर्ट रिलीज हुई थी, वो बस आपको पता होनी चाहिए, थोड़ा सा याद रखना है. फाइन. देन मीथेन, ठीक है, मीथेन. इफ आई से मीथेन का एक बहुत बड़ा सोर्स होता है रिलीज होने का. व्हाट आर दो सोर्सेस? मीथेन इज रिलीज्ड बाय Paddy fields or wetlands. Ma'am, fossil fish, agriculture, landfill waste, like decomposition. करेक्ट. ओके, सो पैडी फील्ड्स हो गए, जिन्हें राइस फील्ड भी बोल सकते हैं. अगेन दिस इज अ PYQ 2020. ओके, 2021 में ये पूछा गया था, so just remember. Fine, that is it. Now UNFCCC, what you should remember, is India a member? Where is the headquarter and definition and everything, you know. Then we have some of the reports. Again, global ticket is important. Okay, global stock ticket is important. Then you can skip things. Global क्रेडिट इनिशिएटिव का इंडिया मेंबर अपने आप ही, क्योंकि इंडिया ने ही लॉन्च किया था इसे. ठीक है, यू शुड नो दिस. दिस कैन बी स्किप. जिसका इंडिया मेंबर नहीं है उसको एज ऑफ नाउ यू कैन स्किप. ओके, ग्लोबल कूलिंग प्लेज का इंडिया सिग्नेटरी नहीं है, बट ये जो प्लेज है ये काफी इंपॉर्टेंट था. देन सम ऑफ द थिंग्स यू कैन स्किप. And G7 climate club is not important. Altera fund is important. UAE ने इसे announce किया था. And for what? Climate change. For climate change. Alright. Altera fund is important. Then this section has been dealt already in detail in the previous lecture, so we'll not be going in it. And Lotus वाला ये जो मैंने बताया था आपको, Lotus project, जिसमें Netherlands and India has joined hands, so like no, they had the handshake for the water conservation technique. So this is important.
NDC is again has been asked by UPSC, so that is again important. Glasgow summit तो important है, ठीक है. Panchamrit, if you can remember the facts, definitely you should. Okay, and after that we have triple planetary global greenhouse gas. See, whenever you see something like greenhouse gas, no, it is always by the WMO. Okay, World Meteorological Organization. Always, just remember this. Then Kampala, Africa का था Kampala, ठीक है. For what? For climate change. That's it. Cool coalition. This can be skipped. Nairobi Declaration is important. Okay, this is a climatic fund. Addis Ababa Declaration is for what? Climate change. Just remember the climate change and it covers everything in it. We have this BW. Okay, it comes under which ministry? B. Ministry. Ministry of Power. Ministry of Power. Yeah. Okay. Ministry of Power it is important. Fine. The National Carbon Registry is launched by UNDP. They can ask you National Carbon Registry recently seen in news was launched by UNDP, UNCC, UNEP, or there can be one more option. So remember UNDP. What it would do, it would just talk about the carbon credits. Right? Mission Life is something you people always use in your answer writing. So definitely बस याद रखना है life है. It will talk about again climate change, how to live minimalistic, fine. And then again MOFCC. Rest, there are so many things you can go yourself, but just remember the keywords, okay? MOFCC and climatic change. Right to repair. Anyone can explain what is right to repair and what it signifies? So see what happens for example in India, suppose if you have purchased the laptop, you have the iPad, you have the cell phones and so many devices. So what happens, suppose you are you go for the repair but they are not doing repair and rather they ask for huge service cost. So instead of paying that, you would think कि मतलब इस पे cost लगाने से अच्छा let me purchase something new. Okay, तो जैसे ही वो जो न्यू लेने वाला जो परचेज करने वाला एक नया आइडिया आता है, डोंट यू थिंक इट वुड कंट्रीब्यूट इन द ई वेस्ट, वो और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जनरेट हो जाएगा. सो दिस इज समथिंग इट हैज बीन प्रैक्टिस्ड इन यूके एंड यूएसए. वहां पे क्या होता है, जब आपने परचेज कर लिया उस डिवाइस को, जब फॉर द फर्स्ट टाइम जब आपने परचेज किया था, तो उसके लिए एक रिपेयर एग्रीमेंट बनता है जिसके तहत जब भी वो अगर वो डिफंक्ट हो जाता है तो यू कैन गो एंड यू कैन गो टू द सर्विस सेंटर्स एंड यू कैन गेट इट रिपेयर्ड. They will not ask you for the huge service cost, rather they would do it. So that would at least prevent the generation of the e-waste. Okay, so that is the right to repair. Means if I have purchased something, I should have a right that I will get it for the free or at the low cost possible. Okay, so at least नया परचेज करने वाला जो आइडिया वो आपके दिमाग में नहीं आए. ओके, नाउ व्हाट दे वुड डू इज they will repair it, they will refurbish it, or they will calibrate it. Okay, rest emphasize on the life, and on the pattern manufacturer would share manual of the product details so that they could get it repaired by sell by third party, or that is it. Just remember the extract. Okay, CBAM by EU, we know that. And this is this has been asked twice at least. अभी तक 2 बार आ चुका है, back to back. 2018 में आया था पहले, फिर 2019 में आया था. Okay, and now next time it can come
again, so just have an idea. Fit for 55 package is again important. 55% जो greenhouse gas emissions है, they have to be reduced. Alright, so just remember it. Now you can skip this part that for the climate swap, like no, just skip it. Reduce of the GHG, green void. Like अगर कोई एक single या one liner question हो सकता है तो there can be a question on this point. India has been selected as the first country under IMO Green Voyage 2050 project. Like I have tried to increase the brightness of my screen. Is it fine now? Like earlier, I feel like वो ज़्यादा dark थी screen, right? Now it is fine. It should be fine now. All right. Then coming to some more new articles. अगर कोई भी नया सब्सटेंस या मिनरल या कोई एलिमेंट या कुछ भी ऐसा न्यूज में है, सो अगेन इट इज योर मॉरल ड्यूटी टू रिमेंबर इट. फॉर एग्जांपल वी हैव दिस, सो यू शुड रिमेंबर कि ये क्या है. दिस इज अ बैक्टीरियल स्ट्रेन, सो लाइक नो, यू शुड रिमेंबर इट. इट विल रिमूव द मीथेन फ्रॉम द मेजर एमिशन साइट्स. लाइक जैसे लैंडफिल्स होता है तो वहां पे बहुत ज्यादा मीथेन हो सकता है, पॉसिबिलिटी. And then we have the paddy fields, then oil and then gas wells. So वहाँ पे बहुत bacteria होते हैं, they produce the methane, and for removal of the methane we have this. Okay. Now UNEP. So where is the headquarter of UNEP? Headquarter. Ma'am, Geneva. Okay. No, So, ma'am. Kenya. hello. Can Hello. you please? Ma'am, Kenya. Yeah, Nairobi, Kenya. Okay. Then we have we have to remember what more. UNEP एक report release करता है. Anyone can tell me the name of that report? And also I told you how to remember it. Anyone? Report of UNEP. Global Adaptation Report. Fine. So we have the Internationally Environmental Authority for what? For Environmental Agenda. Then headquarter, India is a member. And after that, jointly by the IPCC. ठीक है, IPCC किसने किया ये भी याद होना चाहिए. And Common Carbon Metric, UNEP. All right. Remember this section, this one. Highlighted part is important. Then some of the conventions which are like launched by you or UNEP. So Bonn Convention is for Bonn Convention. Tree species, ma'am. Migratory species. And Bonn Challenge. Land degradation से ma'am related. Basel Convention. Transboundary movement of hazardous wastes related, ma'am. Okay, and then we have the Rotterdam, we have the Stockholm Convention. Stockholm POP process. eliminate. So Stockholm is for the POPs, persistent organic pollutants, and then we have the Rotterdam. In Rotterdam, we need to have the prior consent. Okay. Now mercury वाला तो मीना माटा है, ठीक है, पता है आपको. So this is the PIC. Just remember, like no, थोड़ा सा ही डिफरेंस है Rotterdam and Basel में, थोड़ा सा ही, तो थोड़ा सा ध्यान रखना. PIC आ जाता है इसमें, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल इंडिया ने ईरान कुछ वेस्ट भेजे है, ठीक है, तो पहले बेसल में तो लाइक नो पूछा ही नहीं, सीधा ही भेज दिया. रॉटरडैम में PIC है, मतलब ईरान को पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा लाइक नो कि मैं ऐसे ऐसे आपको कंसाइनमेंट भेजने वाला हूँ, इसमें इतना इतना वेस्ट है. सो इंडिया इज लाइक कि ठीक है भेज दो, प्लीज सेंड इट. देन ओनली ईरान और लाइक नो कोई भी जो भी पर्सपेक्टिव कंट्री कैन सेंड इट, ठीक है. साइट्स इज इंपॉर्टेंट. 1973 1972 में वाइल्ड लाइफ एक्ट आता है, उसके अगले साल ये बन जाता है, तो ऐसे याद रखना है आपको साइट्स, ठीक है.
Then Vienna Convention, then we have the CBD, Cartagena भी इसी में आगे आता है, फिर आता है आपका Nagoya. Okay, and then Stockholm Convention. Okay, there are total of 15 agreements under the UNEP. All right, doesn't matter. So this report I was telling you, okay, adaptation gap report. जितने भी gap हैं, जितने भी gap आएंगे ना, सबके सब UNEP. बस ये चीजें याद नहीं करनी होती आपको. ठीक है, you need not to remember कि उसके अंदर क्या चलता है, बस इतना याद रखना है. ठीक है. अच्छा, सपोज करते हैं ये ग्लोबल इन्वायरमेंट की जगह लैंड आ जाता, तो फिर ये कौन सी रिलीज करता, मतलब कौन सा ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करता इसे? If suppose global land outlook is mentioned over here, then IMF. IMF, is it what you're saying? IMF. If you are saying this, no. Land है तो क्या होना चाहिए? UNFCC. So UNCCD. Okay, UNCCD. Okay, land है ना तो. Okay, not UNFCC. Okay, this is just a mistake. Fine. Okay, now we have the WMO. So first of all, जो WMO है, headquarter and member. That's it. Global climatic report है, greenhouse gas जो bulletin है वो इसका है. Again, I would say ये याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. You can just skip this part. Just remember this one कि क्या क्या reports, like names of the reports, right? And इसमें की important है states climate service report. बस. Rest of the things are like no, नहीं आ सकती. Okay. Then we have the air pollution. So air pollution again, UPSC का most favorite topic है. They keep on asking, like they will give you something like कि acid rain जैसे है, ठीक है? तो acid rain के कौन कौन से component होते हैं? They will ask you, जैसे soaps हो गया, NOx हो गया, या फिर वो लोग दे देंगे कि लाइक नो सपोज करते हैं कि एक कंबशन हुआ है, तो अब कंबशन में से कौन कौन सी गैसेस रिलीज होंगी, क्या ये होगी, क्या वो होगी. तो लाइक वाइज ये 2019 में क्वेश्चन आया था, काफी लंबा चौड़ा क्वेश्चन था, 2019 में आया था. तो दिस इज हाउ यू शुड नो कि लाइक नो किसको बर्न करने से कौन सी गैस रिलीज होती है. दो इट इज रियली नॉट ह्यूमनली पॉसिबल सब कुछ याद रख पाना, लेकिन बाय दिस टाइम already you people know how to remember it because we are only 10 days away from the problems. Okay, so fine. Then we have to remember what from this section we have the GRAP. ठीक है, this is what I was telling you. ये काफी पुराना मैकेनिज्म है, ये पता होना चाहिए. ठीक है, 2016 में सुप्रीम कोर्ट के कहने से आया था एंड इसका मैंडेट है वो EPA ने दिया था. ओके, दैट इज इट. रेस्ट यू कैन लाइक नो, ये इसके स्टेजेस मत याद रखो. ठीक है, नोट सो इम्पोर्टेंट, दो ये मेंस में आया हुआ है. ओके, ये मेंस 2023 में आया हुआ है. fine, but for this you can just skip it better. Then we have water. Okay, so just tell me two things here fast. First, NGT, just wait. Yeah, now go for NGT first of all. Suppose if I say NGT जो है वो एक executive body है, isn't it correct? No, this statement is correct, right? What do you think? NGT is an executive body, right? It is false. False it is. It is a statutory body. Now अगर ये statutory है तो ये किसी एक्ट से बना होगा. कौन से एक्ट से बना है NGT? National Green Tribunal. NGT Act of 2010. Like no, most of you, your voice is not audible to me, so better you write your answers in case you want to write. Okay, so answer is NGT 2010. NGT 2010 के एक्ट से बना, ठीक है, 2010 है. Now next comes the CPCB. CPCB. If I say CPCB is a statutory body, true or false? True, ma'am.
Ma'am, true. True, ma'am. Okay, and then it is like no, it has been established through which act? Water Act. Correct. Okay, Water Act. Now, if I say it has been established under Air Act, true or false? False. False, ma'am. False. Okay. So, what is the role of Air Act in CPCB? Air Act का क्या role है CPCB में? Air quality index It for public. derives power from Air Act also. CPCB can take the issues regarding Air Act also. Yes, it can take the issues and it has the powers. Okay, उसकी power वहां से drive हो सकती है. Fine. और तो यही मैंने आपसे पूछा. ठीक है, ये आप देख लेना. Again ये PYQ है 2019 का है. ठीक है. If I'm not wrong, 2019 में ये क्वेश्चन आए हुए हैं. You people can go and check it. Fine. Then comes the regulation on the firecrackers. Also in firecrackers, I have one question to ask. So the question is, Swas, Safal, etc. was seen in news are related to Green Green. crackers. exactly. Okay, तो ये क्या है? Green crackers. ये सभी क्या है? Green crackers. Fine. Now let us see. ओके, ग्रीन क्रैकर्स होने का मतलब क्या है कि उनमें हैजार्डस नहीं है, मतलब हैजार्डस एलिमेंट्स नहीं है, उनमें जो पर्टिकुलेट मैटर है उसकी भी मात्रा कम हो जाएगी, प्लस उनसे ज्यादा लाइक नो ज्यादा खतरा नहीं है. देन यू हैव द स्वास स्टार सफल. ओके, दिस आई वाज आस्किंग. ग्रीन क्रैकर्स है, किसने बनाए हैं? ये इंपॉर्टेंट है मेरे. दिस इज इंपॉर्टेंट. ओके, दे कैन आस्क. एंड आफ्टर दैट ये जो है, ठीक है, ये तो देखो नाम से ही लाइक नो यू पीपल कैन गैस. लड़ी हो गया, अनार हो गया, तो ये तो लाइक नो अच्छे से आप गैस लगा सकते हैं इसमें. ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है अनलेस यू नो, बट क्योंकि स्वाद स्टार सफल जो है 2020 से न्यूज में है, ठीक है, तो गलत नहीं होना चाहिए. फाइन. देन क्रॉप रेजिड्यू आ गया, तो अब स्टबल बर्निंग भी आई जाएगा. स्टबल बर्निंग. ओके, नाउ आई हैव अ क्वेश्चन here for you. Again, inspired from PYQs, let us use this space. Okay, let us suppose I have to, you know, cultivate saplings of wheat. ठीक है, एक तो wheat और एक मान सकते हैं कि कोई भी है, ठीक है, मतलब कोई भी XYZ crop है, या wheat ही ले लो चलो for the timing. अब इस वीट की सैपलिंग्स है, ठीक है, सपोज करते हैं ये एक सैपलिंग है ऐसे करके, इसको कल्टीवेट करना है. ठीक है, आई हैव टू कल्टीवेट इट, मतलब पहले प्रोपागेट होगा ना, फिर जाके आगे वो अच्छे से ग्रो कर पाएगा. अब एक तो ये केस हो सकता है कि मैंने जो वीट की सैपलिंग है उसे मैंने सीधा लाइक नो जहां पे स्टबल बर्निंग हुई थी उसी में ही लगा दिया. लाइक मैंने इतना नहीं सोचा कि जो स्टबल बर्निंग है फर्स्ट लेट मी लाइक नो रिमूव इट. गेटिंग माई पॉइंट कि फॉर एग्जाम्पल ये एक फील्ड है, इस पे स्टबल बर्निंग नहीं की है, स्टबल लेकिन बहुत ज्यादा है बट बर्निंग नहीं किया गया अभी तक. सो व्हाट डू यू थिंक, ये जो वीट अगर मुझे यहाँ पे लगाना है तो उसके लिए आई हैव टू फर्स्ट लाइक नो रिमूव द स्टबल. लाइक अगर स्टबल रिमूव नहीं किया तो क्या ये वीट नहीं लग पाएगा? इज इट? See, my question is कि अगर सपोज आई हैव टू कल्टीवेट द वीट सैपलिंग्स हियर इस वाले लैंड में जहां पे स्टबल ऑलरेडी है, तो या तो जो स्टबल की कटिंग है पहले वो करनी चाहिए, देन ओनली आई शुड लाइक नो शिफ्ट दिस वीट की सैपलिंग हियर. दिस इज द फर्स्ट. या फिर सेकंड केस इज दिस कि ये स्टबल को पूरा बर्न किया जाए, लेकिन लाइक कि जो फील्ड है उसको पूरा प्लेन किया जाए, एंड देन आई शुड लाइक नो गो फॉर दिस वीट सैपलिंग. सो व्हाट शुड आई डू? टेल मी. And burn first. बर्न फर्स्ट. ओके, सपोज बट चलो मान लेते हैं बर्न नहीं किया. अब क्या होगा? वीट नहीं लगाया जा सकता यहाँ पे. अगर मैंने बर्न नहीं किया स्टबल को, देन व्हाट? कांट आई लाइक गो फॉर दिस?
क्या हम इसे नहीं लगा सकते यहाँ पे? क्या बर्न करना सबसे एसेंशियल या प्रायोरिटी पे है? वो नहीं होगा तो क्या सैपलिंग ग्रो नहीं हो सकती? ग्रो को छोड़ो, क्या यहाँ लग भी नहीं सकती? इज इट? टेल मी। मैम मैम लग लग सकती है, उसको डिकम्पोज करके रूट्स को पहले डाई करना होगा, उसको एज ए डिकम्पोजर यूज कर सकते हैं हम न्यू क्रॉप्स के लिए। ऑलराइट, सी ऐसा कोई भी जरूरी नहीं होता है कि जो फील्ड है उसको पहले क्लियर ही करना हो, ठीक है? आप कितने भी प्लांट्स फील्ड्स को बिना क्लियर भी किए लगा सकते हैं। ओके, लाइक नो, कीप योर माइंड ओपन, थोड़ा सा सोच के चलो कि ऐसा क्या ही हो जाएगा, अगर नहीं बर्न किया तो क्या हो जाएगा, ठीक है? ज्यादा से ज्यादा वो जो क्रॉप लगाई उसकी लाइफ नहीं होगी, ऐसा हो सकता है? ऐसा थोड़े वो लगा ही नहीं सकते, देयर इज नो बाय। ओके, पहली बात। सेकेंड क्वेश्चन इफ आई वांट टू आस्क यू कि लाइक नो, सपोज करते हैं जो आपका वो होता है वीट होता है, ठीक है? वीट को ही लेते हैं हम, ये वीट है, ठीक है? अब इसकी जो सैपलिंग्स थी, वैसे तो बेसिकली क्या किया जाता है ना, आप जब भी कोई भी लाइक नो नया प्लांट, लाइक वेन एवर यू प्रोपागेट एनी प्लांट और समथिंग लाइक दिस, सो यू हैव टू ग्रो इट इनटू अ नर्सरी, लाइक नर्सरी में प्रॉपर मीडियम होता है आपके पास, एंड देन यू कैन गो फॉर द कल्टिवेशन प्रॉपर वाला, ठीक है? बट सपोज करते हैं जो वीट की सैपलिंग्स थी, आई कांट अफोर्ड द नर्सरी और आई कांट गो फॉर द नर्सरी मीडियम, रादर मैंने उसकी वीट की सैपलिंग्स को लेके एक सिंपल प्लेन प्लेन प्लेस पे लगा दिया। अब आप मुझे बताएं, लाइक इज इट पॉसिबल और नॉट? ये यहां लगाना जरूरी है या फिर नर्सरी जाना ही होगा? लाइक नर्सरी के मीडियम में उसे पहले वहां पे ऑब्जर्वेशन में रखना होगा, एंड देन ओनली आई कैन पुट इट हियर। टेल मी। नो मैम, ऐसे भी लगा सकते हैं, और वीट हमेशा मतलब इन जनरल ऐसे ही लगाते हैं, राइस के लिए होता है वो जरूर, मतलब चलिए, हाँ। फॉर यू मैं अब इस वीट की जगह राइस को कर, नाउ व्हाट? वीट के मैम लिए जरूरी होती है मैम बढ़ाने कि के लिए फर्स्ट ट्रांसफर होता है, ऐसे भी लगा सकते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी टू गो इन नर्सरी। ओके, जस्ट रिमेम्बर, राइस के लिए मैम ये नेसेसरी होती है। नेसेसरी नहीं है, जस्ट रिमेम्बर, जरूरी नहीं है, ठीक है? यू कैन आप उसको नर्सरी में प्लांट करवा सकते हैं कुछ टाइम के लिए, यू कैन पुट इट अंडर द ऑब्जर्वेशन, बट इट इज नॉट अ नेसेसिटी। अगेन दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ 2021, लाइक उसमें 5-6 स्टेटमेंट्स थी, आई हैव डिस्कस्ड ओके। कुछ कुछ जगह मैंडेट हो सकता है, बट ऐसा नहीं है कि ऐसा किया नहीं जा सकता, ठीक है? मैंडेट का मतलब, फॉर एग्जाम्पल इफ वी टॉक अबाउट राजस्थान, ठीक है? राजस्थान में राइस लगाना ही अपने आप में एक आर्ट है, isn't it? Like राजस्थान is more or less semi arid और arid area, तो यहाँ पे कोकोनट नहीं हो सकता है, यहाँ पे ये चीजें नहीं हो सकती, ठीक है? तो यहाँ पे लाइक नो बाजरा इज कॉमन इन राजस्थान, ओके, बाजरा। बट अगेन अब ये जो है ये बिना पानी, लाइक नो रेन फेड नहीं है, ये ऐसा एज सच इतना रेन फेड नहीं है। सो इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स दैट इसको आप लगा सकते हैं, बट अब राजस्थान के अंदर राइस लगाना, इसका मतलब क्या है? आपको काफी उसके लिए लाइक नो जो भी एग्रीकल्चरल नॉलेज होती है, जो भी फर्टिलाइजर, वो सब काफी लगाने पड़े, ओके? दैट इज व्हाट आई मीन टू से। नाउ क्लाउड सीडिंग इज अ PYQ अगेन, ओके? क्लाउड सीडिंग यू शुड रिमेम्बर, ये जो टाइप्स है इसके, ये बस लाइक नो अंदर जाने की जरूरत नहीं है, बट जस्ट रिमेम्बर कि डायनामिक या हाइग्रोस्कोपिक ये क्या चीज है, ठीक है? दैट इज इनफ। देन स्वच्छ वायु सर्वेक्षण थोड़ा सा याद रखना जरूरी है, बिकॉज पहली बात तो MOEFCC का प्लस ये नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, ठीक है? तो ये इनिशिएटिव आपको याद रखना बहुत जरूरी, ठीक है? प्राण, प्राण का मतलब भी लाइक नो, प्राण का मतलब लाइफ, एंड लाइफ का मतलब रिस्पायरेशन, ऑक्सीजन, CO, तो ये प्राण पोर्टल वो वाला प्राण पोर्टल है, ठीक है? जस्ट लिंक इट विद दैट। Then water pollution in India. So in water pollution in India, you have the CGWA. We have CGWA. Anyone can tell me CGWA has been established by which act? Act, I want to ask. EPA 1986. EP
Okay, again, this is a PYQ and it has been asked twice. Simple plain question, but it has been asked twice. Okay, EPA. Now in this, what you people can remember, total assessment, this is not important. Of exploited areas जो हैं basically कहाँ कहाँ पे है, you can remember the locations and then that is it. World के largest user जो ground water पे ज़्यादा dependent है, those are even like considering the use of the US and China. That what are the impacts? This is something related to mains. So जब आप mains की practice करेंगे, that time we'll see what it is. Okay. Then comes the CGWB headquarter, Haryana Ministry of Jal Shakti. It is in, fine. Then water trading, reuse of the treated wastewater. We have the Israel technology. ठीक है, इसराइल में सलाइनेशन वाटर को वो लाइक नो कन्वर्ट कर देते हैं सिंपल प्लेन वाटर में एंड यू कैन सी कि वाटर वेस्ट नहीं होता है. देन वाटर क्रेडिट में वाटर डॉट ऑर्गेनाइजेशन का ये इनिशिएटिव था जिसमें व्हाट दे वुड प्रोवाइड द सेफ वाटर. ओके, दिस सेक्शन कैन बी स्किप्ड. दिस इफ यू वांट टू रिमेंबर कि CWC कौन सी मिनिस्ट्री में आएगा, तो डेफिनेटली जल शक्ति, दैट इज इट. Jal Diwali or something like, if it can, you people just go through it. Okay, not important. इतने pointers को मत पढ़ना. Amut is a old mission. Now plastic overshoot day. Just tell me, what do you understand by plastic overshoot day? प्लास्टिक ओवरशूट, इसमें ऐसा कोई भी है जिसमें प्लास्टिक पोल्यूशन इतना ज़्यादा हो जाए कि अर्थ की कैपेसिटी से भी ज़्यादा हो जाए, उसे कहते हैं प्लास्टिक ओवरशूट. Okay, good. Plastic overshoot. So overshoot यानी एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड था, उसका ओवरशूट हो गया, यानी उससे भी ऊपर निकल गया. So that is the plastic overshoot day. Now in this, what you can remember something, plastic credits या ये सब देख सकते हैं. ये अगेन एक PYQ है. एक्सेसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब जो प्रोड्यूसर होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. ठीक है, सो दैट इज इम्पॉर्टेंट. And then Prakriti and green initiatives are for the plastic waste management. Not important. Okay, ye important. I want to know one thing. What do you understand by circular economy? So, okay, yeah, let's use this space. Circular economy. Ma'am, model of production and consumption which involves sharing, lending, or reusing, repairing, like. Exactly. Okay, सर्कुलर इकोनॉमी मतलब कोई भी चीज जो है वो घूम के वहीं आ गई है जहां से वो स्टार्ट हुई थी. इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स दैट लाइक नो, सपोज करते हैं जैसे कोई प्लास्टिक था, ठीक है, जैसे प्लास्टिक के कप्स हैं या ग्लासेस है, ठीक है, उसको आपने देखा होगा. प्लास्टिक जो है वो रोड्स में भी यूज होता है, रोड कंस्ट्रक्शन में, ठीक है, तो वो हो गया. या फिर प्लास्टिक के ग्लासेस को उन्होंने रीयूज करके उसकी प्लेट्स बना दिए, या फिर it have been used in any decor system or something कहीं पे भी. So that is the circular economy. मतलब circular economy में it is reuse, recycle, revamp कर दिया गया उसको. ठीक है, okay, कुछ भी waste नहीं होगा. Then we have the plastic waste management. ये एक बार देख लेना, ठीक है, this is important. Then we have the plastic pollution, global partnership on the marine litter fine. ये आ गया. हाँ, ठीक है, दिस इज अ सर्कुलर इकोनॉमी. ठीक है, देन रिसाइकिल इज हियर, कंसिस्टेंट कंप्लायंस है, देन अवेयरनेस एंड ग्रीडीनेस एंड सपोर्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर, कमर्शियल वैल्यू. रिसाइकिल किया गया, प्रोडक्शन किया गया, कंजप्शन. ठीक है, दिस कैन बी अ पोटेंट टॉपिक फॉर मेंस. ओके, फाइन. देन ग्लो लीटर प्रोजेक्ट किस किस का? IMO का, नॉर्वे का एंड FAO का. फॉर व्हाट? फॉर सी बेस्ड मरीन प्लास्टिक लीटर का मैनेजमेंट. दिस कैन बी स्किप्ड. अब आता है आपका लैंड डिग्रेडेशन. तो सब कुछ UNCCG वाला आ गया. ठीक है, एक वो ग्रेट ग्रीन बेल्ट इनिशिएटिव जो है, ग्रेट
green belt. So that is again important. UNCCT ने for the very first time dashboard launch किया, in which they would be talking about the management of the deserted areas. Okay, so now LDN, land degradation neutrality, means the land which have been like no wasted, तो उतने ही अमाउंट में यू हैव टू कंपनसेट इट, सो दैट वुड लैंड डिग्रेडेड न्यूट्रलिटी, तो वो न्यूट्रल हो जाएगा जितना भी लैंड डिग्रेड हुआ। ठीक है, बॉन्ड चैलेंज अभी हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस कर लिया है, सो ये हो चुका है। देन वी हैव द एलडीएन में यू पीपल कैन रीड योर ऑन। देन ग्रीन इंडिया मिशन, अगेन पीवाईक्यू, and national afforestation program is not a PYQ but important। ठीक है, UNCCD ओनली लीगली बाइंडिंग फ्रेमवर्क है जो किसकी बात करता है, डेजर्टिफिकेशन की, 1994 में बना था। इंडिया इज द मेंबर। MIFCC इंडिया के अंदर इम्प्लीमेंटिंग बॉडी या नोडल मिनिस्ट्री है। देन गॉड स्नैपशॉट रिपोर्ट निकालते हैं ये, फाइन, ओके, बस इतना बहुत है। देन सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म्स, okay, so sand and dust storms are common in northwest India, especially Rajasthan once again. Okay, and anyone knows what is advection? Advection. Transfer of heat through the horizontal movement of air, ma'am, like wind. Okay, any example for the same? Ma'am, like wind movement. That's fine कि वो horizontally में होता है, fine. लू, okay, लू, राजस्थान, गुजरात एंड इवन बिहार वाले जो एरियाज है, that is advection. Now these sand and dust storms are the reason of this as well. Okay, fine, advection is the reason behind the loos and all those things. Now what can happen, deposition of the dust on the glacier, warming effect, and then the melting of the ice. Then sand blasting, okay, that is important. Then क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं SDS के लिए, तो अरावली का ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट जो अभी हमने यहाँ पे ग्रेट ग्रीन बेल्ट इनिशिएटिव डिस्कस किया था। देन NAPCC एंड दैट इज इट, बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है इसमें। चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड लाइक हमेशा UNEP ही देता है, तो ये तो याद होगा ही आपको, ठीक है। नाउ एंडोसल्फान, व्हाट इज एंडोसल्फान? एंडोसल्फान, so see, Brightness drug. yeah, pesticide, okay, pesticide, बस इतना आपको ध्यान रखना है। और जो स्टॉकहोम कन्वेंशन है जिसमें हम PVOPs में बात करते हैं, उसके अंदर इसका मेंशन है, फाइन। पेटकोक, जो क्रूड ऑयल की रिफाइनिंग होती है उससे जो एक स्ट्रॉन्ग कार्बन मेटर निकल के आता है, दैट इज द पेटकोक। देन PET 46 is a like no kind of plastic that is being used e-waste in India. India is a third. You should remember first China है, ठीक है, बस India third है, China first है, ये important है, China. Okay, and then we have the Minamata Convention on the mercury. Okay, and now I wanted to ask one thing. What do you understand by refurbish? Like if I say if any device is refurbished, it means what? Ma'am, refurbished means second hand, like something that has already been used before. It can be repaired and then reused again. All right. Okay. So I'm just sharing a backstory from 2016. So what happened? I got one laptop. Like I purchased one laptop, and within 2-3 months, okay, within the like no use of the 2-3 months, and even like मतलब
2-3 घंटे का यूज कितना होता है एक दिन में अगर आपने उसे लैपटॉप को 2 घंटे यूज किया है, तो मतलब दिस इज नॉट अ ह्यूज यूज आई बिलीव, इजंट इट? तो वो लैपटॉप लाइक नो विद इन 4 to 6 months के बीच में वो लैपटॉप खराब हो गया. So when I mailed the company, they said कि like no, they will be sending one refurbished one. All right, and that time like we were not that aware कि ठीक है अगर कोई चीज refurbish है तो उसमें क्या क्या होगा या like no, what are the issues with the refurbished. And then they had a huge like no, एक लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंट था, वो कम से कम 6-10 पेजेस का, ठीक है. एंड देन दे आस्क्ड टू साइन इट कि लाइक नो, फिर जो अभी हमने यूएस और यूके वाला जो राइट टू रिपेयर वाला आर्टिकल पढ़ा था कि हाउ दे कैन लाइक नो just become innocent, and they would pretend as if nothing has happened, and also you cannot blame their companies, or like no, you cannot play a blame game there. So they said कि okay, we will be sending one refurbished laptop and then our part would be done, like जो हमें आपको customer service देनी है. So we would do it, okay. And then like no, I went to the internet, then I checked everything like what is there in the refurbished and like how the things would be going on कि कैसे वो लोग सब check करेंगे, ठीक है. So I came back to and I was like no, I rejected the mail and I said if you are sending the new, it's all fine, else like no, be ready for some legal compliance or something like that, okay. And then within 2 or 3 days they sent the like no, just take the new laptop, okay. So with the help of the refurbished, they definitely make fool to the people because refurbished के टाइम में उनके और क्लॉजेस अलग अलग होते हैं, ठीक है. उसमें they will offer 2-3 customer services, but anyway they just want to like no, ignore the things and they want कि जो आजकल ये राइट टू रिपेयर मूवमेंट भी है, हम इनसे भी निकल जाए, हमें कस्टमर को सर्विस भी ना देना पड़े, एंड इससे ई वेस्ट भी जनरेट नहीं होगा, ठीक है. बिकॉज वापिस लाइक नो, दे टुक माई लैपटॉप अभी, तो वो मेरा जो लैपटॉप लेके गए उन्होंने उसका कुछ तो किया ही होगा, ठीक है. मतलब नया जो लैपटॉप था आई गॉट इट फाइन, वो तो ठीक है, लेकिन अब जो मेरा लैपटॉप जो खराब हो चुका था, दे टुक द चार्जर विच वॉज वर्किंग बट वो भी लेके गए थे, ठीक है. तो द थिंग इज कि वो सब कुछ लेके गए हैं उन्होंने, एक लाइक नो, बिकॉज माई लैपटॉप वॉज ओपन इन फ्रंट ऑफ मी, मतलब इसके अंदर कितने स्पेयर पार्ट होते हैं वो खोल के उन्होंने सब कुछ मेरे सामने रख दिया, ठीक है. मतलब कि द पर्सन हु इज नॉट अ बी टेक, उसके सामने जब आपने पूरे लैपटॉप एक एक चीज को खोल के रख दिया, सो इट वॉज प्रीटी मच डिफिकल्ट टू सी द लैपटॉप इवन कि ये कभी सही भी हो पाएगा क्या, ये कभी अपनी लाइक नो जो पहली कंडीशन थी उसमें आ जाएगा नहीं आएगा, ठीक है. तो जब वो ऐसी हालत कर दे तो वो एक भी चीज नहीं छोड़ते, सो दैट कि अगर कल को कोई केस भी होता है तो दे वुड से कि हमने आपको नया लैपटॉप दिया है, ओके. तो ऐसे करके ये जो रिफर्बिश जैसे कीवर्ड और ये सर्कुलर इकोनॉमी है, ये कहीं ना कहीं अगेन लाइक नो एक कंज्यूमर पे आके ही बाउंडेशन बन जाए, ओके. एनीवेज, सो मीना माटा तो इजी है ही, पता है आपको इसमें क्या क्या. एक चीज याद रखनी है बस, रेडियो एक्टिव वाले जो सब्सटेंसेस होते हैं ना वो इसमें नहीं आते, रेडियो एक्टिव, बस रिमेंबर दैट, ओके. दैट इज इट. बाकी मीनामाटा लाइक नो जो प्लेस है दैट इज इन जापान, वहीं से इस डिसीज को लिया गया और मर्क्यूरी इसके अंदर कंपोनेंट. अच्छा, इफ आई से लाइक नो सपोज गोल्ड है, ठीक है, गोल्ड का जब एक्सट्रैक्शन होता है गोल्ड फील्ड से, क्या उसमें मर्क्यूरी हो सकता है? लाइक इज देयर एनी चांस कि उसमें मर्क्यूरी निकले साथ में गोल्ड के साथ में? डू यू थिंक सो? यस मैम. ओके, गोल्ड माइनिंग, ठीक है, तो गोल्ड माइनिंग में हो सकता है माइक, ठीक है. अगेन आई वुड से यू डोंट नो कि कहां से नहीं निकल सकता है, तो बी सेफ, निकलता ही होगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि बहुत चीजें ऐसी है ना जो नहीं पता होती हैं कि अच्छा यहाँ से भी गोल्ड में से मर्क्यूरी निकल सकता है या कहीं से भी निकल सकता है. तो लाइक नो, आप एकदम बेनिफिट ऑफ द डाउट लेके चलो, ठीक है, होता होगा. इग्नोरेंस इज द ब्लीस मैनी अ टाइम्स. तो कई बार जब ज्यादा जानकारी आपको नहीं होती है, आपके पास बहुत अच्छी नॉलेज नहीं होती है ना, आई वुड से, तो भी एक अच्छी सिचुएशन होती है. क्योंकि ज्यादा ज्ञान भी किसी काम का नहीं है. जब आपको बहुत कुछ पता होता है तो आप अपना लाइक नो थर्ड लेवल वाला ब्रेन चलाना स्टार्ट कर देते हैं और फिर आप ज्यादा ही अंदर डायसेक्शन करेंगे जाके. तो इसलिए जब इन्वायरमेंट का क्वेश्चन आता है थोड़ा सा अपने दिमाग को हल्का रख के क्वेश्चन सॉल्व, फाइन, ठीक है. ये पार्ट हो चुका है और जिनेवा में आया था 2017, ग्लोबल लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है, सिटी थी जापान की, बट ये कोई मतलब नहीं रखता, ठीक है. इंडिया पार्ट है इसका, बस इतनी बात है. एंड सी इस पे तो अगेन लाइक नो यूपीएससी और लाइक एक अलग ही कंट्रोवर्सी है, बट जो भी है लेट इट बी. देयर इज नो नॉन सेफ लेवल ऑफ द एक्सपोजर.
देन केमिकल्स वाला आर्टिकल में बॉन्ड डिक्लेरेशन आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अब क्योंकि देखो एक बॉन्ड चैलेंज है, एक बॉन्ड कन्वेंशन है, एंड तीसरा आ गया है बॉन्ड डिक्लेरेशन। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स यू शुड रिमेंबर। फाइन, वी हैव द बॉन्ड डिक्लेरेशन एज वेल। अब ये बॉन्ड डिक्लेरेशन किसके लिए है? बस केमिकल्स के लिए, इतना याद रखना, ठीक है। बोन केमिकल्स के लिए, बोन केमिकल्स, बोन केमिकल, जस्ट रिमेंबर लाइक दिस। बेसल कन्वेंशन रॉटरडैम आ गया, स्टॉकहोम आ गया, और ये वेगानी है। वेगानी तो जो वेस्ट वाला है ना, उसी के लिए, ठीक है, रेडियो एक्टिव वेस्ट। ओके, मतलब ऐसे याद रखो, बेसल में रेडियो एक्टिव नहीं है, और ये वेगानी जो है वो रेडियो एक्टिव के लिए। तो ऐसे यू कैन रिमेंबर द थिंग्स। देन कम्स द नेक्स्ट आर्टिकल, not so important, okay, skip it। ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी किन वाला हो गया। अचीव बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स आर इंपॉर्टेंट, GEF, ठीक है, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी हो गया। अच्छा, वैसे ही एक GCF भी होता है, GCF। एनीवन कैन टेल मी GCF को कौन से एग्रीमेंट के तहत साइन किया था? GCF प्लस एनीवन कैन टेल मी द हेडक्वार्टर एज वेल, तो फिर अच्छा होगा। और भी GCF को कार्बन एग्रीमेंट के तहत साइन किया गया था, और हेडक्वार्टर है इंक्योन, ओके, इंक्योन हेडक्वार्टर, कोरिया यस यस यस, ओके, इंक्योन साउथ कोरिया, एंड देन कांकुम एग्रीमेंट। ओके, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखो, 1991, ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था इफ आई एम नॉट रॉन्ग अभी, ठीक है। ओके, तो ये तो डिस्कस हुआ हुआ है, इसको छोड़ दो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मॉन्ट्रियल को ना सपोर्ट देता है, बस मॉन्ट्रियल इसमें फाइनेंशियल मैकेनिज्म में कवर नहीं होता है, शुड रिमेंबर दिस थिंग, ओके। एंड देन वी हैव दिस, इसको स्किप कर दो, डिक्लेरेशन ऑन द, सी जब ऐसे आर्टिकल्स होते हैं तो रेदर देन लाइक नो रिमेंबरिंग दिस डिक्लेरेशन, व्हाट यू शुड रिमेंबर कि जैसे युगावडी डॉल्फिन है वो कहाँ मिलती है, और एक होता है सुसु होती है, ठीक है, एक भुलन होती है, तो ये कहाँ कहाँ मिलती है, इन्हें याद रखना जरूरी है, ठीक है, रेदर देन ये डिक्लेरेशन क्या कहते हैं। ओके गुड, इन्होंने दे रखा है यहाँ पे। तो देखो, पहले तो आ गई अमेजन, फिर आ गई गैंगस, आगे फिर इंडस, इंडस को भूलम कहते हैं, ठीक है, पाकिस्तान के आसपास मिलती है। देन टक्सकी, तो टक्सकी कहाँ मिलती है? ब्राजील, कंबोडिया, एंड इरावडी तो आपको पता ही है कहाँ मिलेगी, ठीक है। इरावडी पे एक बार यूपीएससी क्वेश्चन दिया था, उन्होंने यहाँ पे चंबल दे दिया था इरावडी में, कि वो चंबल में मिलती है, तो थोड़ा दिमाग लगाओ, चंबल और इरावडी कोई लेना देना नहीं है। ज्यादा चंबल में क्या मिलता है? चंबल इज नॉन फॉर, सपोज अगर आप चंबल गए तो क्या दिखेगा? घड़ियाल घड़ियाल। वेरी गुड, ओके, घड़ियाल, जिसे क्या बोलते हैं? एलिगेटर, ओके। अब देखो, एलिगेटर और क्रोकोडाइल में भी एक डिफरेंस होता है, एनीवन कैन टेल मी? क्रोकोडाइल और घड़ियाल में एक फर्क होता है, दिखता वैसा ही है बट एक ट्रू क्रोकोडाइल नहीं होता है। तो एनीवन कैन टेल मी घड़ियाल एंड क्रोकोडाइल, या फिर एलिगेटर और क्रोकोडाइल में डिफरेंस? घड़ियाल का माउथ नैरो होता है मैम, आगे से। करेक्ट, ओके, सो Carrier लेट four अस, in its snout. Four in its एग्जैक्टली, snout, ma'am. करेक्ट। मान लेते हैं ये एलिगेटर है, ठीक है, एलिगेटर मतलब जो घड़ियाल हमने बात की, ठीक है। तो जो घड़ियाल होता है ना, उसका स्नाउट जो होता है वो ऐसे होता है, और फिर उसका जो भी है लाइक नो माउथ होगा, ये तो होता है घड़ियाल। क्रोकोडाइल का कैसे होता है? जैसे ये क्रोकोडाइल, तो इसका तो ऐसे ही होगा, मतलब यूं। आई होप आई कैन कम्युनिकेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे। आ गया ना समझ? स्नाउट होता है, ठीक है, SNOUT। तो जो इसका स्नाउट होता है ना, वो काफी ऐसे लाइक नो, लाइक काफी उसकी लेंथ बहुत ज्यादा होती है, विड्थ या ब्रेथ तो बिल्कुल ही नहीं होती, लाइक नो ये देखो ऐसे है, पिन पॉइंटेड होता है एकदम। क्रोकोडाइल का ये ऐसे होता है, तो ये तो आप देखो खुद, इसका लाइक नो लेंथ भी कम है और ब्रेथ भी अच्छी खासी है, ठीक है। और लाइक दिस इज इंपॉर्टेंट, ये पता होना चाहिए आपको कि डिफरेंस होता है, मतलब वो ट्रू क्रोकोडाइल ही नहीं होते, मतलब ऐसा लगा मत आना आंसर, ठीक है, ओके। अच्छा, उसके बाद में ये वाला आर्टिकल एक बार देख लेना, ये आप थोड़ा सा खुद देख लेना, अगर समझ ना आए तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट और अच्छा आर्टिकल है। और उसके बाद में आता है ये, अब ये तो PYQ है, तो जब PYQ है तो पता होना ही चाहिए, ठीक है। सो व्हाट इज द क्वेश्चन? द इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द न्यू वेराइटीज ऑफ द प्लांट, इंटरगवर्नमेंटल बॉडी,
इंटर गवर्नमेंटल मतलब कई गवर्नमेंटल बॉडीज, ठीक है। तो जब इंटर गवर्नमेंटल है तो वो एनजीओ नहीं हो सकता, ठीक है। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, तो वो एनजीओ नहीं हो सकता, याद रखना। जैसे वेटलैंड हो गया, ठीक है। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल हो गया, ये बॉडीज पता होनी चाहिए इनका स्टेटस क्या है। जिनेवा हो गया, ठीक है। इंडिया मेंबर नहीं है इसमें, ये याद रखना प्लीज, रिमेंबर इट। ये PYQ है, दैट इज व्हाई आई एम स्ट्रेसिंग अपॉन दिस। एम आई क्लियर? So next we have is the, okay, let us do one thing, just wait, stop recording. Okay, so like no, I'm just stopping the recording here.